The election in Punjab may not have caused many ripples earlier, but on Sunday night it was watched rather closely. This was the south of Punjab, the land of the electables where much can be managed by the invisible hands, or so we are told. The local strongmen can change sides and the voters follow, a la the children in Pied Piper. Most of these strongmen, and a few women, were told to join PTI in 2018, and if the hushed whispers are to be believed, this time they would be guided elsewhere. And we have also heard which way. However, this shepherding did not take place in Rajanpur once the election was announced due to the death of PTI's Jafar Lagari, who held the seat. The Lagari family was already divided here in the sense the PMLN ticket holder was also a Lagari, the grandson of Farooq Lagari. A wise Lagari, Farooq Lagari's son and the candidate's father, is a key member of the PMLN. So once the election was announced, the family was facing each other. The PTI had the advantage of its popularity and that of Jafar Lagari, and it also used the last few days to allege it was facing great pressure in the constituency. It claimed it was facing arrests, bullying and other strong-arm tactics to discourage its supporters. And that the other side was enjoying the support of the provincial government as well as the local administration. Chances are PMLN will creep closer to the establishment out of fear of its shrinking political space. The results, however, were in PTI's favor, which managed to get over 50% of the polled vote. The rest of the parties were far behind. The PMLN was second and the PPP a far third. Apart from all else, it doesn't show the PPP has made a comeback in the province so far. Also, the TLP did not poll impressive numbers. With every by-election, it seems the price the PMLN has paid for taking over the government in April 2022 is becoming clearer, which adds to the perception that the party is fearful of elections. It also explains the great pains some of the ministers have gone to justify a possible delay in elections. Not that they are alone in wanting this delay. But how will the PMLN react to this particular election? Chances are it will brush off this win as simply a repeat of the 2018 election, when PTI had won this seat. And then it will go back to its new biennia, or narrative, of the Gang of Five, which has seen a change of caste, quietly, since it first appeared. Sadly, this election came too soon for anyone, including the PMLN, to judge the effectiveness of its new narrative. However, the problem is that the PMLN has been here before. The last time it attacked the judiciary before and after Panama, the result was unity among the judges. Will it prove different this time around, especially as the establishment has now switched sides? This week should provide some indication as the proceedings of the case on the elections in KP and Punjab go ahead. But more than that, chances are that the PMLN will also creep closer to the establishment out of sheer fear of its shrinking political space. This may not help it much in the long term, for it has never helped any party. From 2018 to 2022, the PTI sat on the same lap, with its support base appearing to be little more than a chimera. And now the PMLN is repeating the same mistakes. Perhaps all parties should remember the fate of those that which clung too closely to military dictators. The dictators eventually go away, but their Sahulat Kar, facilitators, struggle to recover their identity in the eyes of the electorate. Think of the Jamaat-e-Islami in the post-Zia period and the JI, the JUIF and PMLQ, both its factions, in the post-2008 period. This is not to say the PTI is sitting pretty. While it enjoys popular support, its breakup with the establishment continues. And so far, our age-old tradition continues. The road to Islamabad can only be traveled by those who enjoy popular support as well as the approval of the establishment. One without the other doesn't get a party anywhere, as yet. And the PPP so far is missing the first part of this outside of Sindh. But beyond the fate of our political parties is the question of the entire country, with the continuously worsening economic situation. The state is on the verge of default and the people face crushing inflation. Meanwhile, the establishment, political parties and the judiciary are locked in a power struggle,
which has just led to its latest episode where no one seems to know who or which institution is supposed to announce the election date. This is just the latest proof of our insanity. The real crisis is our complete inability to make decisions, and nope, this doesn't refer to the government but the larger issue of political instability and its resolution. Half the country is decided the elections will be delayed so some difficult decisions of restructuring can be taken by the PMLN or the imagined technocrats. But they cannot explain why, if this decision has been made, it is being delayed and political uncertainty is ruling the roost, during which time an 80-odd member cabinet is wasting time and an angry Imran Khan is whipping up emotion. The other half is convinced that elections cannot be delayed, as they cite the constitution or the mood on the streets. But they can't explain why the election is not being announced, so as to end time wasting and anger whipping, for lack of a better word. Is it because they really are that clueless or simply confused? Can we please have a decision, soon? The writer is a journalist. Published in Dawn, February 28, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. पंजाब में होने वाले इंतखाबात ने भले ही पहले ज्यादा हलचल पैदा न की हो लेकिन इतवार की रात को इस पर गहरी नजर रखी गई। ये पंजाब का जनूबी इलाका था जो इलेक्टेबल्स की सरजमीन थी जहां बहुत कुछ नजर न आने वाले हाथों से चलाया जा सकता है, अब फिर हमें बताया जाता है। मकामी ताकतवर लोग पार्टी तब्दील कर सकते हैं और वोटर उनकी पैरवी करते हैं, जैसा कि पेड पाइपर के बच्चे करते हैं। इनमें से ज्यादातर ताकतवर मर्दों और कुछ ख्वातीन को 2018 में पीटीआई में शामिल होने के लिए कहा गया था और अगर दबी हुई अफवाहों पर यकीन किया जाए तो इस बार उन्हें कहीं और रहनुमाई दी जाएगी। और हमने ये भी सुना है कि किस रास्ते से। ताहम पीटीआई के जफर लगारी के इंतकाल की वजह से इंतखाबात का ऐलान होने के बाद राजनपुर में ये कार्रवाई नहीं हुई। लगारी खानदान पहले ही यहाँ तकसीम हो चुका था क्योंकि मुस्लिम लीग नून का टिकट होल्डर भी लगारी था। फारूक लगारी के पोते फारूक लगारी के बेटे और उम्मीदवार के वालिद अवैस लगारी मुस्लिम लीग नून के अहम रुकन हैं। लिहाजा जैसे ही इंतखाबात का ऐलान हुआ, फैमिली एक दूसरे के आमने सामने थी। पीटीआई को अपनी मकबूलियत और जफर लगारी की मकबूलियत का फायदा था और उसने गुज़िश्ता चंद दिनों को ये इल्ज़ाम भी लगाया कि इसे हल्के में शदीद दबाव का सामना है। उसने दावा किया कि इसे अपने हामियों की हौसला शिकनी के लिए गिरफ्तारियों, गुंडागर्दी और दीगर सख्त हरबों का सामना है, और ये कि दूसरे फरीक को सूबाई हुकूमत के साथ साथ मकामी इंतजामिया की भी हिमायत हासिल थी। इस बात के इम्कानात हैं कि मुस्लिम लीग नून अपनी सुकड़ती हुई सियासी जगह के खौफ से एस्टेब्लिशमेंट के करीब आ जाएगी। ताहम नताइज पीटीआई के हक में थे जो 50% से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रही। बाकी पार्टियां बहुत पीछे थीं। मुस्लिम लीग नून दूसरे और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर रही। इन सब के अलावा इससे यह जाहिर नहीं होता कि पी ने अब तक सूबे में वापसी की है। इसके अलावा टीएलपी ने भी मुतासिर कुन अदाद शुमार हासिल नहीं किए। हर ज़िम्मी इंतखाबात के साथ ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने अप्रैल 2022 में हुकूमत संभालने की कीमत अदा की है, जिससे इस तासुर में इजाफा होता है कि पार्टी इंतखाबात से खौफजदा है। इसमें इंतखाबात में मुमकिना ताख़ीर का जवाज़ पेश करने के लिए कुछ वज़रा को कितने बड़े दर्द का सामना करना पड़ा है, इसकी भी वजाहत की गई है। ऐसा नहीं है कि वो इस ताख़ीर को चाहते हुए अकेले हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून इस मखसूस इंतखाबात पर क्या रद्द अमल जाहिर करेगी। इम्कान है कि वो इस जीत को 2018 के इंतखाबात की तकरार के तौर पर देखेंगे, जब पीटीआई ने इस नशिस्त पर कामयाबी हासिल की थी। और फिर ये 5 अफराद पर मुश्तमिल गैंग, जिसने पहली बार मंजर आम पर आने के बाद से खामोशी से कास्ट में तब्दीली देखी है, के बारे में अपने नए बयानिए की तरफ वापस जाएगा। अफसोस की बात यह है कि ये इंतखाबात मुस्लिम लीग नून समेत किसी के लिए भी इसके नए बयानिए की तासीर का अंदाज़ा लगाने के लिए बहुत जल्द आए। ताहम मसला यह है कि मुस्लिम लीग नून यहाँ पहले भी रह चुकी है। पिछली बार पनामा से पहले और बाद में उसने अदलिया पर हमला किया था, जिसका नतीजा जजों में इत्तेहाद था।
क्या इस बार हालात मुख्तलिफ साबित होंगे, खास तौर पर जब स्टेब्लिशमेंट ने अब पार्टी तब्दील कर ली है? इस हफ्ते कुछ इशारे मिलने चाहिए क्योंकि केपी और पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक केस की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा इम्कानात ये हैं कि मुस्लिम लीग नून अपनी सुकड़ती हुई सियासी जगह के खौफ से स्टेब्लिशमेंट के करीब पहुंच जाएगी। यह तवील मुद्दत में उसकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता है क्योंकि उसने कभी भी किसी पार्टी की मदद नहीं की है। 2018 से 2022 तक पीटीआई एक ही गोद में बैठी रही और उसकी हिमायत की बुनियाद एक चीमेरे से कुछ ज्यादा दिखाई देती थी। और अब मुस्लिम लीग नून वही गलतियां दोहरा रही है। शायद तमाम जमातों को उन लोगों की किस्मत को याद रखना चाहिए जो फौजी आमिरों के बहुत करीब थे। डिक्टेटर आखिरकार चले जाते हैं लेकिन उनके सहूलतकार राय दहिंदगान की नजरों में अपनी शनाख्त बहाल करने के लिए जिदोजहद करते हैं। जिया के बाद के दौर में जमात इस्लामी और 2008 के बाद के दौर में जमात इस्लामी JUI फिर और मुस्लिम लीग इसके दोनों धड़े के बारे में सोचें। इसका मतलब ये नहीं है कि PTI खूबसूरत बैठी है। अगरचे उसे अवामी हिमायत हासिल है लेकिन स्टेब्लिशमेंट के साथ इसका टूटना जारी है। और अब तक हमारी सदियों पुरानी रवायत जारी है कि इस्लामाबाद का रास्ता सिर्फ वही लोग तय कर सकते हैं जिन्हें अवामी हिमायत के साथ साथ स्टेब्लिशमेंट की मंजूरी भी हासिल हो। दूसरे के बगैर एक को अभी तक कहीं भी पार्टी नहीं मिलती है और पीपल्स पार्टी अब तक सिंध से बाहर इसका पहला हिस्सा खो चुकी है। लेकिन हमारी सियासी पार्टियों की किस्मत से आगे पूरे मुल्क का सवाल है जिसमें मुसलसल बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल है। रियासत डिफॉल्ट के दहाने पर है और अवाम को शदीद महंगाई का सामना है। दरी असना एस्टेब्लिशमेंट, सियासी जमातें और अदलिया इक़्तिदार की कशमकश में फंसी हुई है जिसकी वजह से इसका ताज़ा तरीन वाक़या पेश आया है जहां किसी को भी ये मालूम नहीं है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान कौन सा इदारा करेगा। ये हमारे पागलपन का ताज़ा तरीन सबूत है। असल बहरान यह है कि हम फैसले करने में मुकम्मल तौर पर नाअहल हैं और नहीं, इसका ताल्लुक हुकूमत से नहीं बल्कि सियासी अदम इस्तेहकाम और इसके हल के बड़े मसले से। आधे मुल्क में इंतखाबात में ताख़ीर का फैसला किया गया है, लिहाजा तंजीम नो के कुछ मुश्किल फैसले मुस्लिम लीग नून या फर्जी टेक्नोक्रेट्स की जानिब से किए जा सकते हैं। लेकिन वो इस बात की वजाहत नहीं कर सकते कि अगर ये फैसला किया गया है इसमें ताख़ीर क्यों की जा रही है और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल जन्म ले रही है। इस दौरान 80 रुकनी काबीना वक्त ज़ाय कर रही है और नाराज इमरान खान जज्बात को हुआ दे रहे हैं। दूसरे आधे लोगों को यकीन है कि इंतखाबात में ताख़ीर नहीं की जा सकती क्योंकि वो आईना सड़कों पर मोड़ का हवाला देते हैं। लेकिन वो इस बात की वजाहत नहीं कर सकते कि इंतखाबात का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा है ताकि वक्त ज़ाय करने और गुस्से को हुआ देने बेहतर अल्फाज की कमी की वजह से को ख़त्म किया जा सके। क्या उसकी वजह यह है कि वो वाकई बेखबर हैं या सिर्फ उलझन में हैं? क्या हम जल्द ही कोई फैसला कर सकते हैं? मजमून निगार एक सहाफ़ी हैं। अखज़ शदा बतारीख 28 फरवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.